Hello students, continuing with chapter 10, exercise 10.3, there were certain problems which you are having. So taking question number 12, which says, two lines passing through a point 23 intersect each other at an angle of 60 degree. Slope of one of the lines is 2, find the equation of the other line. So here line L1 and L2 are L1 and the other line having a slope 2 are intersecting each other at a common point P at an angle of 60 degree. So we are supposed to find the equation of line L1, correct? I think we will take the slope of line L1 as M1. So we don't even know that whether the value of M1 is greater than 2 or less than 2. So we will use the formula first of tan theta to find the slope of the equation. It will be definitely M1 minus M upon 1 plus M1M, or this is theta, correct? Or tan theta is M minus M1 upon 1 plus M1M. Done. So we know the value of theta as 60 degree. So it's tan 60 is equals to M1 minus 2 upon 1 plus 2 M1, or tan 60 degree is equals to 2 minus M1 upon 1 plus 2 M1. Okay, we all know that value of tan 60 is root 3. So it will be root 3 plus 2 root 3 M1 is equals to M1 minus 2, or root 3 plus 2 root 3 M1 is equals to 2 minus M1. Okay. So 2 root 3 minus 1 M1 is equals to minus 2 minus root 3. So value of M1 over here will be minus common ले लेते हैं 2 plus root 3 upon, let us take minus common here also, divide करने पे 1 minus 2 root 3, correct, cancel out हो गया, और यहाँ पे 2 root 3 plus 1 M1 is equals to 2 minus root 3. So value of M1 will be 2 minus root 3 upon 1 plus 2 root 3. Now there are two options, आप इसको rationalize भी कर सकते थे या आप इसको directly भी solve कर सकते हैं. Equation of L1 will be, so L1 is a line who has a slope M1 and it is passing through point 2, 3. So there will be two equations of L1, correct? The first equation will be y minus y1. The value of y1 is 3 is equals to m1 into x minus x1, which is 2. So y minus 3 is equals to 2 plus root 3 into x minus 2 divided by 1 minus 2 root 3, or y minus y1 is equals to m1 into x minus x1, and here the value of m1 is given. It will be 2 minus root 3 into x minus 2 on 1 plus 2 root 3. I hope now you will be able to solve it and get the answer. So I am writing solve further. Correct? So this was question number 12. Okay. Now we will take question number 16, which has been asked by you, which says the perpendicular from the origin P and Q are the lengths of the perpendicular from the origin on so and so lines respectively. Show that P square plus 4Q square is equals to this. So we have origin over here
whose coordinates everyone knows are 0 0. एक लाइन ये है, एक लाइन बस, करेक्ट। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इन पर, करेक्ट। D1 हो गया, डन। एंड इनकी लेंथ हमें P और Q दे रखे, नॉट D1 D2। we'll write PQ only, try to vary, P और स्मॉल q दे रखा है, ठीक है। लाइक इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x cos थीटा माइनस y sin थीटा, माइनस लिख देता हूं मैं k cos 2 थीटा is equals to 0. This is the line of the first equation, and the line of the equation of the second line is x sec theta plus y cosec theta minus k is equals to 0. Correct. So as we know, the distance of a perpendicular on a given line is represented by ax1 plus by1 plus c upon root a square plus d square. So it will be 0 into cos theta minus 0 into sin theta, correct। origin से perpendicular डाला है, minus k cos 2 theta upon under root में हो गया x a square plus b square, so it is cos square theta plus minus sin theta का whole square, right। And since it can never be negative, तो अपन ने इसको नॉर्मल्स लगा दिया। So this is the distance of length of the perpendicular drawn from the origin on the first line, ये वाली लाइन, ठीक बात है ना भैया, डन। So P is equals to k cos 2 theta, मॉडुलस में है, माइनस भी रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यू कैन से cos square theta plus sin square theta. We all know sin square theta plus cos square theta 1 होता है। Since हमें p square की वैल्यू चाहिए तो हमें लिख दिया p square is equals to k square cos square 2 theta, correct। Now value of q will be ax1 plus by1 plus c, so 0 into sec theta plus 0 into cosec theta minus k upon under root a square plus b square, which is sec square theta plus cosec square theta, done। Again it has to be positive, so modulus लगा दी। Now what we can do, we can square both the sides, so it becomes this upon under root हट जाएगा तो it will be sec square theta plus cosec square theta, sin को उसमें convert कर लेते हैं, k square upon 1 upon cos square theta plus 1 upon sin square theta, correct। Let us take the LCM in the denominator, so जो LCM आ गया डिनोमिनेटर में वो क्या आएगा, cos square theta into sin square theta, और यहाँ पे होगा sin square theta plus cos square theta, न्यूमरेटर में k square है, so it becomes k square cos square theta sin square theta, correct। upon 1 लिख दूँ, let us write 1, so the value of q square is k square cos square theta sin square theta। Now what we have to prove, p square plus 4q square, so let us put the values of p square as well as q. So value of p square we all know is k square cos square 2 theta, so it is k square cos square 2 theta plus 4, value of q square is k square sin square theta cos square theta,
what we can do, we can take k square common. ये तो हो गया cos square 2 theta और ये हो गया 4 sin square theta cos square theta. Correct. Now what it can be written as cos square 2 theta plus 2 sin theta cos theta का whole square. अब ये 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू होती है sin 2 theta. So trigonometry का 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है. अगेन कॉमर्स स्टूडेंट्स इट इज बेसिकली नॉन वैल्यूएटिव फॉर यू, लेकिन याद तो रख लो तो बेसिक फॉर्मूला है. cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है. So we have proved this. Okay, so this is how we have proved the question number 16, which was a problem for all of you. Now coming to miscellaneous exercise 10, question number 5, you had the problem. Now question says you had a problem because it is basically made from to be solved from the formulas of class 11 trigonometry. Find the perpendicular distance from the origin to the line joining points cos theta sin theta and cos phi sin phi. So we have let the points A and B. We have let the points A and B, which are cos theta sin theta and cos phi sin phi. A perpendicular distance we have let from the origin as D. So equation of the line AB with double point formula will be y minus sin theta is equals to y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. So just cross multiplied, and after solving it we get x sin phi minus sin theta minus y cos phi minus cos theta plus sin phi cos sin theta cos phi minus cos theta sin phi is equals to 0. Now this is a formula of class 11 which says sin a minus b का formula होता है sin a cos b minus cos a sin b. So it can be written as sin a minus b. So sin theta minus phi. Correct. Now distance d will be ax1. So put values of x and y as 0 0. So it will be 0 into this minus 0 into this plus sin theta minus phi upon under root a square plus b square. So y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो अपन ने नेगेटिव लगाया, लेकिन स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएगा. सो इट विल बी sin थीटा माइनस फाई अपॉन अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. नाउ sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1 होते हैं, विच वी हैव पुट. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होते हैं, ये भी हमने पुट कर दिया. -2 कॉमन ले लिया, सो cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई बन गया. नाउ हियर वी हैव टू यूज सर्टेन फॉर्मूलाज ऑफ क्लास 11. cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b. ये यहाँ पे यूज में लिया है हमने. sin 2a is 2 sin a cos a, ये हमने यहाँ पे काम में लिया है. एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, ये अपन ने यहाँ पे काम में लिया है. करेक्ट. दीज आर ऑल फॉर्मूलाज विच यू हैव टू स्टडी. तो कोई दिक्कत नहीं, इनको यूज में ले सकते हैं हम. सो इट कैन बी रिटन एज 2 sin थीटा माइनस 5/2 cos थीटा माइनस 5/2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2. सो ये थीटा है अपना पूरा, इसका हाफ एंगल हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस 5/2. ओके. सो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 खाली 2 हो गया, sin स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 sin थीटा माइनस 5/2 हो गया. Whether it is in the modulus or outside the modulus, modulus सिर्फ डिस्टेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए लिखा है. सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin थीटा माइनस 5/2 से ये भी कैंसिल हो गया. सो d की वैल्यू आ गई अपने पास. द वैल्यू ऑफ d इज cos थीटा माइनस 5/2. ये पीछे से आंसर मैच कराने के लिए क्या है. एल्स आप क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं अगर आपको लगता है तो. इट्स ऑफ नो प्रॉब्लम एट ऑल. Correct. So later on we will be studying all these formulas. Don't worry about them. Just go through these questions. I hope you will be able to understand certain formulas and concepts which we have studied today. Waiting for new problems from your side. Please make sure that you are solving the questions, learning them right now the way you are being asked to do. Later on you will be able to understand more. So keep sending your problems so that I can clarify your doubts more. So thank you. Stay home, stay safe, and enjoy straight line.